Hello everyone, hope you all are safe at your places. And we were doing lesson number 2, that is your structure of atom. And in last lecture we are done with achievements of electromagnetic wave theory. And from this we come to know that electromagnetic wave theory was very successful in explaining the properties of light like reflection, refraction, interference, diffraction. In this video we come to know what is interference, that how your waves, your light waves really combine, what is constructive interference, what is destructive interference, and diffraction. So today we'll start with our next topic, and your next topic is limitations of electromagnetic wave theory. Clear? So your electromagnetic wave theory could not explain phenomena of black body radiation, phenomena of photoelectric effect, the variation of heat capacity of solids as a function of temperature, the line spectra of hydrogen with reference to hydrogen. Clear? So we'll do all of these one by one. So we'll start with very first, that is phenomena of black body radiation. So we'll discuss very first, that is phenomena of black body radiations. So first question, what is black body? What is phenomena? Is black body really black? So we'll discuss all these things. Clear? So firstly, if we see any color, for example, if we see red color, why it appears red? Because when light falls on that object, so all the rest of the colors get absorbed, and only your red color is get what? Reflected. Clear? That's why we see what? Red color, isn't it? So if we are able to see any color, we can see that color only, क्योंकि सिर्फ बचे वही जो कलर आपके पास रिफ्लेक्ट होता है वही कलर हमें दिखाई देता है. क्लियर? दैट्स व्हाई वी, फॉर एग्जांपल, इफ वी आर एबल टू सी ग्रीन कलर, व्हाई? बिकॉज all remaining colors will get absorbed, all the other components of light will get absorbed, and only because light is made up of 7 colors, and it is left with what? One color, that is what? Green. क्लियर? तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, जिस वजह से हमें कलर दिखाई दे रहा है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई हाउ वी आर एबल टू सी वाइट कलर? बेसिकली वाइट एंड ब्लैक आर नॉट योर कलर्स. जब सारे के सारे बच्चे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो हमें जो चीज दिखाई देती है दैट इज वाइट. कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वो आपके पास क्या है? क्लियर? वाइट. क्लियर? सो वाइट कलर मीन्स which reflect all the colors. White means which reflect all the colors. Now question arises, what black means? So black color means all the wavelengths get absorbed and none of the wavelength is reflected, or all the colors get absorbed and none of the color is reflected. That is known as what? Black. So black color means all the wavelengths get absorbed and none of the wavelength is reflected. So this is your what? Black. Clear? Black means all the colors get absorbed and none of them is reflected, or colors or wavelength, whatever you want to say. Clear? Wavelengths and none of them is reflected. This is known as what? Black. So black and white are not basically colors. Now question arises, what is black body? Is it really black? So black body is not really black. black body का मतलब ये नहीं है black. अब black कहाँ? यहीं से आया आपके पास कंसेप्ट black. So बच्चे black body क्या है? आइडियल black body वो है जो आपके पास, जिसपे आपके पास किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे. क्लियर? किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे या किसी भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी गिरे, वो सारी की सारी, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट, कुछ भी. क्लियर? सो आइडियल ब्लैक बॉडी वो है जिसपे आपके पास किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस गिरे, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले और एमिट कर दे.
क्लियर, एब्जॉर्ब कर रहे और साथ में क्या कर दे, एमिट कर दे, दैट इज नोन एज योर व्हाट, आइडियल ब्लैक बॉडी. क्लियर. सो आइडियल ब्लैक बॉडी डज नॉट मीन्स ब्लैक. Clear. So what is ideal black body? So ideal black body is that which emits and absorbs radiations of all frequencies. So I am going to write definition of your ideal black body. So ideal black body is that which emits and absorbs radiations of all frequencies clear, frequencies clear, and radiations emitted by such body is known as black body radiations. So एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग एनी आइडियल ब्लैक बॉडी. क्लियर. ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि कोई बॉडी है जो सारी की सारी रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब. क्लियर. सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब. बट एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग सच आइडियल बॉडी. इवन योर ब्लैक होल. क्लियर. सो ब्लैक होल इज ऑल्सो योर वॉट, ब्लैक बॉडी. Isn't it? So black body does not means that it is black in color. Clear. For example, if we are having an iron ball which is having high melting point, so it will also act as what, your black body, because it is able to absorb radiations of maximum frequency. So your iron ball will be what, will be considered as what, your black body. Clear. So we'll take one example. Now if we'll take your iron ball, clear, and it will start heating your iron ball. So at room temperature, the color of your iron bar will be what, gray. Clear. And when you'll start heating your iron ball, clear, you'll start heating your iron bar, you'll start increasing temperature, so its color will initially be what, red. So when the temperature is what, high, at high temperature its color is what, red. Further, when you'll increase temperature high, you'll make temperature more higher, so the color turns to what, your orange. Clear. And on further increase of your temperature, it turns white. Clear. And ultimately it turns what, blue. Clear. So initially gray, red, orange, white, blue. So from here what we observe, so when we are increasing temperature, when you are doing what, when you are increasing temperature, so with increase in temperature, color is changing from longer wavelength to what, shorter wavelength. For example, we are having what, Vibgyor. Clear. So red, orange, yellow, देन वॉट, ब्लू. ग्रीन नहीं दिखाई देता है. क्लियर. ब्लू. अब बीच में ये मत सोचना कि व्हाइट क्यों आ गया. जब आप लोगों ने टेम्परेचर बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो इसने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट को क्या करना, या वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से हमें बीच में क्या दिखाई देना शुरू हो गया, व्हाइट. क्लियर. सो रेड, ऑरेंज, ब्लू. सो विद increase in temperature, the color is changing from longer wavelength, red is having what, longer wavelength or greater wavelength than that of what, blue. So longer wavelength to shorter wavelength, isn't it? Or what we'll say, from low frequency, and if it is having what, we know your frequency and wavelength are what, inversely proportional to each other. So if red color is having what, maximum wavelength, so it will have what, minimum frequency. So from low frequency
to high frequency. So when we are heating your iron ball, so we are with two observation that with increase in temperature there is change in what? Wavelength or in what? Frequency, isn't it? ये हम लोगों ने क्या किया? डराइव किया कि जैसे जैसे हम आयरन बार को हीट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास कलर भी चेंज हो रहा है. कलर चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या आपके पास क्या है? वेवलेंथ चेंज हो रही है. क्लियर, इजंट इट? नाउ जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने बोला था कि जब भी एनर्जी एमिट होती है तो वो एमिट होती है कंटिन्यूसली. Clear? Whenever your energy is emitted, it is emitted or absorbed continuously. The energy of any electromagnetic radiation is proportional to intensity. I'm having notes of that video. Clear? That the energy of the C, and I have written note here. So the energy of electromagnetic radiation is directly, energy of any electromagnetic radiation is directly proportional to what? Intensity and independent of frequency and wavelength. So according to your electromagnetic wave theory, if you are increasing temperature, clear, if you are increasing temperature, so the radiations which are coming out will increase the intensity, मतलब उसकी intensity बढ़ेगी, and intensity means what? Bright. The color of your body will remain same. So according to your electromagnetic wave theory, the energy emitted or absorbed continuously, hence the energy of electromagnetic radiation is directly proportional to intensity, and it is independent to what? Frequency or wavelength. So thus, according to electromagnetic wave theory, radiations emitted by the body which is being heated should have the same color. अगर आप किसी बॉडी को हीट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लिए क्या है कि अगर आप किसी भी, मान लो अगर आप आयरन बॉल को हीट कर रहे हो, तो जब आप उसको हीट करोगे तो उसका आपके पास जो कलर है वो क्या रहेगा? हीट करने पे कलर क्या रहेगा? सेम. ऑल्दो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है. इंटेंसिटी मीन्स उसकी ब्राइटनेस बढ़ सकती है. पहले हल्का रेड था, थोड़ा ज्यादा रेड होगा, रेड 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 रेड, बट कलर विल रिमेन व्हाट? सेम. क्लियर? But however, when iron bar is heated, so the change in color is seen. So when we are heating your what? Iron bar, so change in color is seen. So that is on heating, the frequency of radiation increases or wavelength decreases. So this phenomena is not explained by your what? Electromagnetic wave theory. Clear? ये phenomena electromagnetic wave theory नहीं बता पाई, और मैंने इसके notes आप लोगों को लिख दिए. So according to electromagnetic wave theory, the energy emitted or absorbed continuously, hence the energy of electromagnetic radiations are directly proportional to intensity. Energy of electromagnetic radiation is directly proportional to intensity. means जो energy electromagnetic radiation से निकल रही है, या जब आप energy provide कर रहे हैं तो जो radiations निकल रही हैं, that is directly proportional to intensity. means वो उस object की brightness को बढ़ाएंगी, उसके color पे कोई फर्क नहीं डालेंगी, and is independent of wavelength and frequency. Thus, according to electromagnetic wave theory, radiations emitted by the body which is being heated should have same color. तो अगर brightness बढ़ रही है और frequency और wavelength क्या है? Same, तो उसकी आपके पास कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. Clear? But however, when iron bar is heated, change in color is seen. That is, on heating, the frequency of the radiation increases or wavelength decreases. Clear? So we'll plot a graph. So how will be your graph? So here we are having lambda and here we are having nu. क्लियर? और मैं आपको एक दूसरा व्यू दूंगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से ये ग्राफ समझ आएगा. अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो इतने अच्छे से पता नहीं चलता है. सो
अब देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर है 1000 केल्विन, यहाँ पे है 2000 केल्विन, यहाँ पे है 3000 केल्विन, लेट अस सपोज, एंड हियर वी आर हैविंग टेम्परेचर 4000 केल्विन। सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, या फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज। सो व्हेन वी आर increasing temperature, your wavelength is what, decreasing. So your temperature is inversely proportional to what, wavelength. Clear? This is your Wien's law. आप लोग प्लस 2 में पढ़ेंगे Wien's law. Clear? So when we are increasing temperature, your wavelength is what, decreasing. So यही आपके पास ग्राफ में दिखाया गया है. Now see, when your temperature is 1000 Kelvin, your wavelength is what, कौन से कलर की लाइट निकल रही है, रेड। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो क्या सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट, एक ही वेवलेंथ की आपके पास एक ही वेवलेंथ एमिट होगी? आपके पास सारे कलर्स की वेवलेंथ एमिट होंगी, बट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट होगी वो कलर हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी वहां पे क्या है, मैक्सिमम है। If here we are able to see orange color, why we are able to see orange color? Although wavelength of different light or radiations of different wavelength are emitting, but the wavelength of your orange is what, maximum. That's why we are able to see what, your ऑरेंज कलर। क्लियर? हमें ब्लू कलर ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी सारे रेडिएशन, वेवलेंथ की रेडिएशंस निकल रही हैं, पर जो मैक्सिमम निकल रही हैं वो किसके निकल रही हैं, ब्लू की। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? सो अगर बच्चे हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करें, सो फॉर एग्जाम्पल एट टेम्परेचर 1000 केल्विन, सो जब हम लोग टेम्परेचर 1000 केल्विन पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि लेट अस सपोज कि 1000 पे आपके पास दिस इज योर रेड। क्लियर? जब हमने इसको हीट किया तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो वेवलेंथ आई दैट इज ऑफ व्हाट, यहाँ पे जो दिस इज नोन एज व्हाट, लैम्डा। Here this is what, lambda max। की बहुत से कलर की रेडिएशंस निकल रही थी, बट रेड कलर की रेडिएशंस क्या है, मैक्सिमम। क्लियर? isn't it? So this is at temperature T1. Clear? Now if you are increasing temperature, if you are increasing temperature, your lambda is what, decreasing. So जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपके पास lambda क्या हो गया, decrease. So when you are increasing temperature, your lambda is what, lambda is decreasing. So जो कर्व है वो थोड़ा इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? सो हेयर दिस विल बी योर व्हाट, second lambda max. Clear? And if you'll further increase temperature, this will be what, T2. If you'll further increase temperature, clear? So आपकी wavelength क्या कर जाएगी, और decrease हो जाएगी। Clear? So wavelength और decrease हो जाएगी। So this will be what, this is not mu, this is intensity. Clear? So your plot will be somewhere here. So as you are increasing what, temperature, so what you will see that your wavelength is what, decreasing. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आपकी वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो इस तरफ को मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपके पास वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हमने टेम्परेचर T1 रखा तो आपके पास रेड कलर, क्लियर, रेड कलर की लाइट हम लोगों को दिखाई दी। क्लियर? रेड कलर की लाइट हम लोगों को क्या करी, रेड कलर दिखाई दिया आयरन बॉल का, बिकॉज इस टाइम पे इस रेड कलर की इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो द वेवलेंथ विद highest intensity is this one. So wavelength with highest intensity is this one, means यहाँ पे आपके पास जो रेड कलर की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। So this is lambda max that corresponds to red light. If we'll talk about here, so अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस टेम्परेचर पे आपके पास जो ऑरेंज कलर है उसकी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। So the wavelength with हाईएस्ट इंटेंसिटी, ऐसा नहीं है बाकी कलर की वेवलेंथ्स भी निकलेंगी, बाकी कलर की वेवलेंथ्स भी निकलेगी, बट जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी योर व्हाट, क्लियर, दैट विल बी योर
ऑरेंज, क्लियर, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वही कलर हमें क्या करेगा, दिखाई देगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ अगर हम लोग इस ग्राफ को समझ रहे हैं तो हमने क्या बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज कर रहा है योर वेवलेंथ विल डिक्रीज. सो इफ यू लुक एट योर एनसीईआरटी, सो एनसीईआरटी में भी आपके पास डायग्राम कुछ इसी तरह से है. सो इफ वी आर हैविंग सी हियर इट इज रिटन टेम्परेचर T1 इज greater than what, sorry, T2 is greater than T1. So at temperature T1 your lambda is here, at temperature T2 your lambda is here. So as your temperature is what, increasing, as your temperature is increasing your lambda is decreasing. Clear? और एक particular temperature पे एक particular आपके पास बहुत सी इंटेंसिटी की वेवलेंथ्स निकलती हैं, क्लियर, बट जिसकी इंटेंसिटी आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, वो कलर हमें दिखाई देता है और उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड इफ यूल हैव एनी डाउट यू मे आस्क. क्लियर? सो नाउ ऑल्दो आपके पास ये तो हमने सारी बात कर ली. नाउ actually your electromagnetic theory is failed to describe all this phenomena. Clear? आपके पास electromagnetic theory ये नहीं बता सकी कि iron ball जो है, iron bar जो है, why there is a change in color of your what, iron bar, कि iron bar का color जो है वो change क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि electromagnetic wave theory के according तो अगर आप लोग क्या करते हो, energy, अगर आपके पास कोई भी सोर्स को आप हीट करते हो और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. कि अगर आपने किसी आयरन बॉल को हीट किया और उससे अगर रेडिएशंस एमिट हो रही हैं तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए. क्लियर? कलर जो है वो ब्राइट होना चाहिए, ना कि कलर में क्या आना चाहिए, चेंज. मतलब उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, मतलब ब्राइटनेस बढ़ सकती है, बट कलर चेंज नहीं हो सकता. सो इस चीज को आपके पास, इस फिनोमिना को आपके पास जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. दैट्स व्हाई अनदर थ्योरी play an important role, that is your Planck's quantum theory. So now we'll discuss Planck's quantum theory, and this theory was put forward by Planck in 1900, which was further extended by Einstein in your 1905. So we'll discuss what is Planck's quantum theory. So what Planck said, he said that if any source is emitting energy, if any source is emitting or absorbing energy, so that energy, that radiant energy must be what, discontinuous, that is not continuous. What Planck is saying, that if any source is emitting energy in the form of radiations, so that radiant energy is discontinuous, that is not continuous, and that emitted energy must be in the form of small packets. And this emitted energy will be in the form of what, small packets, and these packets, small packets of energy is known as what, quanta, or each packet of energy is known as quantum. Clear? So what Planck said, that if any source, for example here we are having any source, for example if we are having sun, so if sun is radiating energy, if sun is radiating energy, so this energy is not continuous, this is not continuous, but this energy is in the form of what, small packets, and each packet is known as your what, is known as your quantum. Each packet is known as quantum, and we will talk about number of packets. So those number of packets are known as quanta. So what is his first postulate? He said that if any source is emitting radiations or radiating energy, so that radiating energy, the radiant energy must be what, non-continuous, and this energy must be in the form of what, small packets, and each packet is known as quantum. So here I am writing, concluding this first point. So first point is as given in your book. So the radiant energy emitted or absorbed, write down, emitted or absorbed by any source is non-continuous.
continuous, and this energy, that is this radiant energy, this energy travels in the form of small packets, and each packet is known as what? Is known as your quantum. Clear? So your quantum, always remember, your quantum is what? Singular, and your quanta is what? Plural. So quantum is singular and your quanta is plural. That is, packets of energy are known as what? Quanta. Quantums नहीं बोलेंगे उसको. Clear? So what was his first postulate? So his first postulate is the radiant energy emitted or absorbed by any source is non-continuous, and the energy travels in the form of what? Small packets, and each packet is known as quantum. However, it appears that if sun is radiating energy, this energy is what? Continuous, but this is non-continuous. For example, if I'll make you stand with a bulletproof jacket, and here I am having what? AK-47. ठीक है, अब ये मत बोलना कि टेररिस्ट बन गई मैम, है ना, वैसे ही हूँ. Clear? So here if we are having AK-57 and let us suppose this AK-57 give 200 shots in 1 second. 1 second. So when I'll make shots, so what you'll feel? You'll feel that they are what? They are very continuous. They are moving continuous, but actually they are coming one next to each other. But हमें क्या appear हो रहा है? ये क्या है? Continuous. Clear? So similarly, if any source is radiating energy, so that energy must be what? Discontinuous. It can't be what? Continuous. So this is first very basic difference between your Planck's quantum theory and your what? And your electromagnetic wave theory. Clear? This is first postulate. Now in case of light, if we'll talk about light, so in case of light, these quantum or these quanta are known as what? Photons. So in case of light, these packets of energy are known as photons. Clear? So energy travel in the form of what? Small packets. These packets may be quanta, or these packets may be what? Photons. Quantum. Clear? Quanta if we are having what? Plural. So this was his first postulate. Now if we'll talk about second postulate, so what was his second postulate? The energy of each quantum is directly proportional to frequency of radiation. Clear? So his second postulate is energy of each quantum is directly proportional to what? Frequency of radiations. I am writing here definition. So energy of each quanta or quantum is directly proportional to frequency of radiation. So what he said, that if you'll increase the energy, if you'll heat any particle, for example, if you are having a body and if you are heating this body, clear, and if you are continuously heating this body, so more and more radiation with higher frequency will be evolved. So if you are heating this body continuously, more and more energy is absorbed by this body. Clear? Absorbed by the atoms of this body, and they emit radiations of higher frequency. Getting my point? So energy is directly proportional to what? Frequency. That means if you are increasing the energy of any body by any
source by heating, by providing anything. So if you are if you are increasing the energy of any source, then what is happening, the body will emit radiations of higher frequency. More will be the energy, more will be what, frequency. उसकी frequency क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी. Clear? So energy is directly proportional to frequency. This was his second postulate. E is directly proportional to nu. And when we remove this sign of proportionality, so we are having a proportionality constant that is known as h nu. Clear? And this h is known as your Planck's constant. This h is known as what? Planck's constant. Clear? This h is known as what? Planck's constant, and its value is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Joule per second नहीं है, क्या है, joule second. So value of Planck's constant is, that is h is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joules second. So this is your Planck's constant. Now let us suppose that energy of one photon, that is E, is equals to what? H nu. If this is the energy of what? One photon. So let the energy of one photon or quantum is equal to what? E is equals to what? H nu. So if we are having n photons, so energy will be equals to E is equals to nh nu. Clear? So this is basically your Planck's quantum theory. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत easy है. Clear? So this is your Planck's quantum theory. तो दो ही postulates थे mainly, कि अगर आपके पास कोई भी energy, कोई भी source energy emit या absorb करता है, तो that will be what? Discontinuous. And it will be in the form of what? It will be in the form of small packets, and these packets of energy are known as what? Quanta. And in case of light, these packets of energy are known as what? Your photons. Second postulate is energy of each quantum is directly proportional to frequency. That means if you are increasing energy of any particle, if you are increasing energy of any atom or anything, so the radiations of higher frequency will be emitted. और अगर आप frequency बढ़ाएंगे तो energy बढ़ जाएगी. So they both are directly proportional to each other. Clear? So this is all about your Planck's quantum theory. Now how your Planck's quantum theory give explanation of black body radiation. So how your Planck's quantum theory give explanation of black body radiations. So if we'll heat any solid or any solid object, किसी भी अगर आप solid object को क्या करते हो, heat करते हो, so these solid objects are made up of, anything in this world is made up of what? Atoms. So when we are heating it or when we are providing energy to it, what will happen? These particles or these atoms will start what? These atoms will start oscillating, and they will start releasing what? Energy. Clear? They will start emitting what? Radiations of different frequencies, isn't it? So if you are heating any solid substance, or when some solid substance is heated, the atoms of this solid substance start what? Oscillating, and they will start emitting what? Radiation of certain frequency. Let this frequency be what? Nu. Now, as heating is continuous, as you are heating this object what? Continuously, so you are providing more and more energy to this solid, isn't it? And if you are providing more and more energy to this solid, so this solid is absorbing more and more energy. So atoms of this solid will absorb more and more energy. So if they will absorb more and more energy, they will oscillate what? More fastly. वो और ज़्यादा जोर से oscillate करेंगे, और जितनी जोर से oscillate करेंगे उतनी ही
हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस क्या करेंगी, एमिट होंगी. क्लियर. सो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं. सो नाउ एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, more and more energy is being absorbed by the atoms and they emit radiations of what, higher frequency. Clear. So as we are similarly, as we are what, heating your iron nail, सो इनिशियली द कलर वॉज वॉट, रेड. उसकी आपके पास इनिशियली कलर क्या था आपके पास, रेड. क्योंकि जब हमने बच्चे उसको हीट करना स्टार्ट किया, योर व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग योर वॉट, आयरन रॉड, सो atoms will start what, vibrating. These the atoms which are present here, they will start what, vibrating. अब जब हमने इसको स्टार्टिंग में हीट किया तो इसमें जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी तो इन एटम्स ने ऑसिलेट किया और इन्होंने कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या की, एमिट की. अब अगर कम एनर्जी प्रोवाइड की, स्टार्टिंग में हीट किया तो पार्टिकल्स में एनर्जी क्या होगी, कम, तो कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होंगी, इजंट इट. सो अगर कम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज एमिट होंगी तो आपके पास जो कलर होगा दैट विल बी ऑफ व्हाट, अगेन लोअर फ्रीक्वेंसी. नाउ इफ विल स्टार्ट कॉन्टिन्यूसली हीटिंग. अब हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, 2000 केल्विन. सो when we are increasing your what, heat, we are increasing what, energy. और जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इन रेडिएशंस, ये जो एटम्स हैं ये आपके पास रेडिएशंस क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एमिट कर रहे हैं. और जितनी ज़्यादा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं आपके पास, वैसे ही आपके पास क्या होता जा रहा है, कलर चेंज होता जा रहा है, इजंट इट. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा है. सो रेड इज हैविंग व्हाट, योर लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड ब्लू इज हैविंग व्हाट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट एट व्हाट, मैक्सिमम टेम्परेचर. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे किसी भी सोर्स की एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है. और जैसे ही आपके पास एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल्स की ऑसिलेट करने की पावर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. और जितना जोर से वो ऑसिलेट कर रहे हैं उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं. और जितनी हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेंगे उतना ही आपके पास क्या करता जाएगा, कलर चेंज होता जाएगा, isn't it? So this is how your phenomena of black body radiation was discovered or explained by your Planck's quantum theory. I hope this is clear to you, and still you are having any doubt, you may ask. Thank you.